आइए आगे बढ़ते हैं एंड सीखते हैं हाउ टू बिल्ड योर वोकैब्युलरी। यस, देखिए ये है 4 स्टेप प्रोसेस। एक एक करके समझेंगे एंड देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट वी नीड टू डू। फर्स्ट स्टेप इज व्हेन यू हियर अ वर्ड व्हिच इज न्यू, दैट मीन्स यू आइडेंटिफाई इट, राइट? आइडेंटिफाई न्यू वर्ड्स। यहां हमने एक एग्जाम्पल लिया है द वर्ड एनरिच का। एनरिच, आइडेंटिफाई न्यू वर्ड। हमने वर्ड सुना, मान लेते हैं वो एनरिच है, एनरिच यहां लिखते हैं। ओके, सेकेंड स्टेप इज फाइंड। फाइंड व्हाट? फाइंड इट्स मीनिंग। हमने इसका मीनिंग फाइंड आउट करना है, ओके, डिक्शनरी से ऑब्वियसली। क्या मीनिंग है इसका? वेल, इट्स रिटन राइट हियर, टू इंप्रूव और एनहांस द क्वालिटी ऑफ और द वैल्यू ऑफ समथिंग। अब वो कैसे यूज करना है ये भी हमें आना चाहिए, इजंट इट? सो हमारा थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए? use. Absolutely. Identify the new word, find its meaning and then use it in a sentence. आइए देखते हैं हाँ कैसे यूज किया है हमने word enrich को। We need to read books to enrich our vocabulary. देखा? We need to read books to enrich our vocabulary. 3 steps समझ में आ गया? Identify the new word, find its meaning, use it in a sentence. What is the 4th step here? The 4th step is simple. Repeat. The more you will repeat this process, the better you are going to get. That means your vocabulary is for sure to improve. Or in other words, you will be able to enrich your vocabulary. देखा? फिर से यूज कर लिया। ये 4 स्टेप जो है ये गारंटीड है अगर आप 3 मंथ्स तक इनको फॉलो करें, सिर्फ 3 मंथ्स, एंड यू वुड सी दैट योर वोकैबुलरी 3 मंथ्स अगो वाज, फॉर इंस्टेंस, इफ एट A level, it will reach exponentially by the end of 3rd month. जी हाँ, सच कह रहा हूं, यूज करके देखिए इनको 4 स्टेप्स को। All you have to do is find out, identify new words, find out its meaning, use it in a sentence and keep on repeating this process. 3 months, guaranteed results. 3 months में आपकी vocabulary बढ़ना तय है अगर आप ये 4 steps follow करते हैं and keep looking for new words. That's the most important thing. ठीक है? और इसी तरीके से आपका vocabulary का light bulb जल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये तो सीख लिया हाउ टू बिल्ड योर वोकैबुलरी इन 4 सिंपल स्टेप्स। अब आइए मिलके सीखते हैं व्हाट शेप आवर माइंडसेट या फिर व्हाट रीशेप आवर माइंडसेट। ओके, लेट्स डिस्कस फर्स्ट व्हाट शेप्स आवर माइंडसेट। भाई माइंडसेट को क्या क्या चीजें मिलके बनाती हैं? वेल, वेरी सिंपल, जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप पढ़ते हैं और जो आप बोलते हैं, ये 4 चीजें मिलके आपका एक माइंडसेट शेप अप करती हैं। तो रीशेप कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, उन्हीं चीजों को चेंज करके। जी हाँ, दैट मीन्स वी नीड टू चेंज द वे वी सी, लिसन, रीड एंड स्पीक। एक एक करके समझेंगे, पर पहले ये समझ लीजिए इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, जब आप जिम जाने का सोचते हैं, वर्कआउट करने का सोचते हैं, तो आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने पड़ते हैं, है ना? जैसे कि सुबह जल्दी उठना पड़ता है, वर्कआउट के लिए टाइम निकालना पड़ता है ना? और कभी कभी जंक फूड को मना करना पड़ता है, जो चीज़ हमें पसंद है शायद खाना, उनको मना करना पड़ता है ताकि हम शेप में रहें और शेप में आ जाएं। उसी तरीके से हमें अपना माइंडसेट भी रीशेप करना है। दैट मीन्स वी मे हैव टू मेक, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी उस माइंडसेट में हैं जहां आप चेंज कर सकते हैं अपने आप को बहुत इजीली, kudos to you, और अगर आप नहीं कर सकते then you need to reshape your mindset. That means हमें कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने होंगे। जैसे कि फर्स्ट, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है? सी, जैसे हमने अभी डिस्कस किया ना, व्हाट शेप्स योर माइंडसेट? वेल, व्हाट यू सी। तो हम क्या देखते हैं जो हमें बदलना है? अब हमें वो चीजें देखनी है जो हमारी वोकैबुलरी को एनरिच या बढ़ाती हैं, जो हमें हेल्प करेगी अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाने में। उसके लिए आई विल सजेस्ट
you need to change few of the channels probably that you watch on YouTube. That means maybe you should start watching some TED Talk videos. अगर आपको TED Talk वीडियोस के बारे में नहीं पता, डोंट वरी, मैं आपको एक लिस्ट भेजूंगा, एनीवेज आपके पास वो लिस्ट होगी, आपको लिस्ट मिल जाएगी, उस लिस्ट में से आप देखिएगा और उन वीडियोस को सुन सकते हैं, या फिर BBC के न्यूज़ चैनल्स को सुन सकते हैं, या फिर कुछ इंटरेस्टिंग चैनल्स ऑन यूट्यूब, जैसे कि व्हाट आई लव आर गैजेट्स, okay, which includes your mobile phones, and also I love cars. तो मेरे YouTube पे आपको बहुत सारे ऐसे चैनल्स मिलेंगे जहाँ पे मैंने उनको स्पेशली सब्सक्राइब किया है, so that I can keep getting updates from them and I keep listening to them. So what it does, it helps me build my knowledge around things. तो आप भी वो कर सकते हैं, that is YouTube पे जाके TED Talk वीडियो सुन सकते हैं, उनमें से कुछ नए वर्ड्स ढूंढ सकते हैं. एक एग्जाम्पल देता हूँ. मान लीजिए आपको आईफोन बहुत पसंद है, ओके, लेट्स अज्यूम, ओके, कि आपको आईफोन बहुत पसंद है. तो जब भी एक आईफोन लॉन्च होने वाला होता है, उसके टीजर्स आने शुरू हो जाते हैं, लोग उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं. देयर आर लॉट ऑफ YouTube channels who will begin to talk about the upcoming models and what all things will you get in it, right? What you can do is listen to those videos, listen to those podcasts, but good podcast in English language, especially those जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले. That means new words that you can learn, all right? Or that ways you will be able to learn the new words. और क्योंकि आप कुछ ऐसी चीज़ सुन रहे हैं जो आपके इंटरेस्ट की है, तो आपको और इजी होगा उसको ग्रास्प करना. उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को लेके आप अपने दोस्तों से डिस्कस कर सकते हैं. और जब अपने दोस्तों से डिस्कस करेंगे तो आप वो जो वर्ड्स आपने सीखे हैं, अब आप उनको यूज कर पाएंगे सेंटेंसेस में, है ना. विन विन. एक तो आप अपनी नॉलेज डिस्कस कर रहे हैं उनके साथ, उनको बता रहे हैं, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, कि जो आपने सीखा है और जो आपको पता है उनकी भी नॉलेज एनरिच होगी. प्लस आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहां आप अपने नए वर्ड्स को सेंटेंस के रूप में यूज कर सकें. है ना इफेक्टिव. देखा, जरा सा चेंज एंड हाउ यू सी थिंग्स. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड स्टेप, विच इज लिसन. अब देखिए, यहां सिर्फ सुनना नहीं है, यहां ध्यान से सुनना है. दैट मीन्स वी जस्ट डोंट हैव टू लिसन, वी हैव टू एक्टिवली लिसन. देखिए होता क्या है, most of the time we listen to a lot of things but we don't pay attention to what is being actually said, and that is what we are going to discuss in the bonus content, in which I have discussed listening and active listening in detail. तो उसको आप ज़रूर सुनिएगा जब ये मॉड्यूल आप ख़त्म कर लें. पर अभी के लिए सरल भाषा में समझ लेते हैं. लिसनिंग मीन्स दैट व्हाट आर वी लिसनिंग ऑल्सो शेप्स अप आवर माइंड. इसीलिए हमें अब वो सुनना है जो हमारा माइंड जो है बेटर शेप अप करे और हमारा वोकैबुलरी बेटर करे, एनहांस करे, एनरिच करे. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उन लोगों को सुनेंगे जो कि हमें प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, जो हमें हेल्प करेंगे इवेंचुअली क्या करने में, वोकैबुलरी बिल्ड करने में. जो मैंने आपको टेड टॉक वीडियोस भेजे हैं ना, उसमें से आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और उनको सुन सकते हैं. सो लिसन टू देयर पॉडकास्ट, listen to how they say, listen to the words, and also keep noting down. Remember the 4 steps of vocabulary builder? वो ज़रूर से आपको याद करना है. Identify, find, use, and then repeat. तो ये तो हो गया listening के बारे में. Okay? अब बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की ओर, which is to read. आइए मिलके सीखते हैं how is this going to shape up our mindset. Point number 1, increase brain activity. See, when we read a book, we envision ourselves in the story. So, we walk with the character, we laugh with the character, we cry with the character, so much so that when we finish the book, we feel a sense of accomplishment, like a task has been completed, or probably a mission if you're reading that kind of a book. All of this actually fires up neurons in your brain, which helps you not just to think better, but to visualize better too.
and critically evaluate the twist and turn of the story. It helps you increase your brain activity. Point number 2. It helps and aid in developing vivid imagination. Now, it may depend on cases to cases, but vivid imagination is bound to happen if you're reading. And uski wajah se, it can also help or develop or nurture out of the box thinking and problem solving. Most of the problem solvers are creative. That is the only reason they are able to see a problem and come out with a solution in a more creative way. They can see things which others probably are not able to. Vivid imagination. Point number 3. Improve concentration. जब आप एक बुक लेते हैं और उसे पढ़ना शुरू करते हैं, it actually engages more than one brain function. So comprehension fluency तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ auditory and visual processes are also engaged. होता क्या है, when you begin to read a book, you begin to develop better concentration. कैसे? क्योंकि इतने सारे ब्रेन फंक्शन मिलके आपके हेल्प करते हैं concentration skill को बढ़ाने में. See, remember in school what used to happen? We were told to focus on what we are reading, focus करके पढ़ना है, concentrate on what we are reading, and the effect was that if you read with full concentration, you'll be able to remember more things in details, isn't it? And reading actually helps you to concentrate, because without concentration you won't be able to imagine a world that is there on that paper, isn't it? तो होगा क्या? एक तो आपका concentration skill बढ़ेगा और उसकी वजह से आपके बाकी के brain functions भी all sharp होते जाएंगे. इसीलिए when I say improve concentration, it will actually take you to a place जहाँ पे, see, normally क्या होता है, if you're going and then you read something, while you're on a run, you may not be able to remember it as much. However, if you have an improved concentration, one glance, that's all it takes for you to remember some information. Believe it or not, it is actually proven fact. Better concentration means you are able to remember things and you're able to recollect them from your memory banks. ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं fourth point की, which is stimulation. Provide stimulation. Fourth point. How does it provide stimulation? भाई जो बुक आप पढ़ रहे हैं ना, वो सिर्फ एक बुक नहीं रह जाती है, because your brain actually creates pictures out of what you're reading. It's true. See, जो आप पढ़ रहे होते हैं, that world exists only on a piece of paper, but your brain will actually work it for you through the imagination, and you will be able to see that world as if it is alive. Wanna know a fascinating thing? Your brain cannot distinguish between what you're reading in a book and the real world. You don't believe me, I'm sure, but let me tell you why. Because that's the reason why sometimes people cry at movies. They know fully well that movie is not real, the characters are not real, the director is directing them, and the producer is paying them money to cry on screen. But even then, we connect with that character. We begin to imagine that we are in that situation. And all those surge of emotions, what you see on the screen, those are fake because they're being paid to do that. We cry for real. That is what it is. That is what your brain is able to do for you. So, when you go to a mall and you see a VR game, virtual reality game, or when you read a book, your brain can't differentiate between the two. For the brain, it works the same way. Now imagine, with such powerful tool that we have, all we have to do is exercise it. Just the way we exercise our physical body to get fit, right? We get up early, or we run, we jog, we lift weights. The same way, your brain, which is also an organ and also needs some exercise, need you to exercise it. How? Any Sudoku puzzle, word game, reading, they are known scientifically to help you exercise your brain, and thus keeping Alzheimer's and other brain-related diseases at bay. That is the reason why I have been emphasizing and asking you to focus on reading ever since we started,
isn't it? Reading truly helps you exercise your brain, and a sharper brain means sharper you, right? Okay, moving on. Fifth point, empathy. It actually helps you to work on your empathy skills. How? Well, when you're reading a book, you actually are able to relate to that character. तो आप उसके joyous moments या उसके sad moments में पढ़ते हुए feel करते हैं कि मैं भी वहीं पर हूँ. पढ़ते हुए सोच कभी कभी some of the people begin to think that they are that character and they are happy and they are sad. Okay, and the reason for that is because you're able to relate to that character, and relating with someone in terms of putting yourself in someone's shoes is what empathy is all about. So it helps you, ready for this? It helps you improve on your empathy skills. And last but not the least, okay? Now, of course, there will be a recap for this, so don't worry that I'm just blabbering it out and you won't be able to note it down. I am going to recap it and you'll be able to see it on your screen. But for now, let me quickly tell you the last point of reading, okay? It relaxes you. Ji haan. A 2009 study at University of Sussex found out that reading can actually help you reduce up to 68% of your stress. Reading a fictional book is known to have lowered down the heart rate and thus relaxing your muscles. Imagine that. Just mere 6 minutes of reading has an effect on your stress levels. It reduces them. Imagine that. Benefits of reading are humongous. जो भी मैं आपको बता रहा हूँ अभी तक, I hope it should and must encourage you to pick up a book and read. A book with a strong narrative will always hook you up to it. तो क्या होगा जब आपने बुक बंद भी कर दी है कि मैंने एक चैप्टर पढ़ा और मैं बंद कर रहा हूँ, it will keep pulling you back. Your brain will tell you to pick up that book and find out आगे क्या होता है, what happens next. And that is what is the fun in reading. Okay, it keeps stimulating, you keep stimulating your brain, and thus you keep finding out new words, you keep finding out learning new words, you keep adding them into your vocabulary. Benefits are humongous. And you know what? There is no downside of reading. I am telling you for a fact. Okay? To all my kids, I never give them anything else but books. And trust me, it is better that they start early with books. क्योंकि एक बार books हाथ में आ गई, उसके बाद you can be relaxed. You know why? Because all those hurdangbaji that happens in the house, if you give them a book, they're studying, sitting quietly in their corner, and you can have your peace back in the house. Sometime it helps, trust me. Trust me. Anyways, I hope you're able to understand what I'm trying to tell you here. Reading has all the upside and no downside. So pick up a book today if you still haven't. Let's move on.